Namaste, welcome, suswagatam, my friends. A very, very warm welcome to this, the most inspiring show on Indian television, Vivekananda Answers. Namaste and welcome, revered Maharaj Swami Atmashraddhananda ji. You, I believe, are the editor of the Vedanta Kesari at the Ramakrishna Mutt in Chennai. Welcome to the show. और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा Mrs. Sutapa Roy का, a renowned educationist जो कि हमारे समाज के कार्यों से जुड़ी हुई हैं, एक समाज सेविका भी हैं. मैडम, it's a very, very warm welcome to our show over here. नहीं, आप अभी क्या सोच रहे हैं? आज हमारी जो यंग ब्रिगेड है वो कहाँ गई? नो क्लू ना. अरे आज कुछ नया होने वाला है. यस दोस्तों, आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट्स हैं. वो देखने में जरूर यंग हैं, लेकिन दिलो दिमाग से हम सबसे 2 जूते आगे हैं. आई प्रॉमिस यू. आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव विद मी टुडे अ ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड बबलिंग यंग. I wouldn't, yes, they are students, but they are also our future. Let's welcome them to the show. Come, sirs. Yeah. आइए. Well, folks, कैसा लग रहा है यहाँ के? And you're going to make this show really work for all of us, yes? Yes. And you're going to share all your adventures of social responsibilities with all the millions of people out there. अरे, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन अभी तक दिया ही नहीं हूँ. मैं हूँ जयंत कृपलानी, आपका होस्ट एंड दोस्त, और इस शो को मैं हैंडल करने की कोशिश करता हूं. देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सबको पता ही है. He was a great monk and his heart was full of love for all. और उन्होंने हमें जीवन की सही दिशा दिखाई थी. Well, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सी कहानी. स्वामी जी since a very young age was very generous and kind. जब वो आपकी उम्र के थे, एक दिन, why am I telling you this story? I don't know it as well as this Swami ji over here. I'm sure who'll do a much better job of telling this story about Swami Vivekananda. Please go right ahead, sir. तो बचपन से ही स्वामी जी दूसरों के प्रति उनके हृदय में बहुत भावना थी, बहुत सहानुभूति थी. जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार वो घर में जब कोई आता था व्यक्ति, कोई साधु या कोई भिक्षुक या कोई मांगने वाला, तो अपने हाथ से जो भी उनके हाथ में आता था वो दे देते थे. तो एक बार उनके घर में कोई व्यक्ति आया तो ऐसे तो उन्होंने दे दिया अपने हाथ से. तो ये देख के उनकी माँ को बड़ा खराब लगा कि ये तो उसको सब कुछ दे देगा, छोटा बच्चा है. तो उन्होंने उनको, जो उनका 2 मंजिला इमारत थे, जो मकान था, उसके ऊपर वाले जो पहले कमरे में उन्होंने बंद कर दिया. वहीं से, अब ऐसा है ना, उनके अंदर में इतनी शक्ति है, इतना उत्साह है कि वहीं से खिड़की से उन्होंने देना शुरू कर दिया. वहीं खिड़की से उन्होंने अपने कपड़े जो थे, अपने पहने हुए कपड़े भी उन्होंने भिक्षुओं को देना शुरू कर दिया. Well, that was a really interesting story about Swami ji as a young man. Did you like it? महाराज जी, इस कहानी से हम सबको जो सीख मिलती है, मैं चाहूंगा आप अपने तरीके से इन बच्चों को समझाएं. पहले तो हमें ये सीखना है कि हमें दूसरों के प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरों के प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए. और स्वामी जी के जीवन में ये बचपन से ही दिखाई देता है कि वो दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते थे. दूसरा ये कि जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, कुछ देते हैं, तो असल में हम दूसरों को देते तो हैं, लेकिन वो अंततः हमारे पास आ जाता है. इट्स लाइक ए साइकिल, इट्स लाइक ए सर्क्यूट. आपने यहाँ दिया और इन लॉन्ग रन इट कम्स बैक टू यू. फील ब्लेस्ड दैट यू हैव डन समथिंग. यू फील ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने दूसरों के लिए कुछ किया. और शायद वही जो चीज़ है कि हमको अपने आप को एक सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ वेलबींग, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, वो हमारे पास आती है. Sutapa here, what do you think is the practice of social contribution? Why is it necessary and why should it be infused from childhood? Infusing, this is what I do. I mean, what we teachers are trying to do in schools and to inculcate this in children. They are young adults now, and of course there are children who are younger than them who are doing this kind of work. They're not living in isolation. You know, so when they're traveling back and forth from school, home, here, their tuitions, etc. I mean, it's not as if their eyes are shut. They can see
you know, what's happening around them. And I think from there, you'll find in a lot of them that there is this feeling that they need to do something to eradicate that, you know, to lessen that, to lessen the misery. So therefore, you know, if the school community can just, you know, support and sustain that, I think then you know, we've achieved a lot. Is there a particular age when one should start inculcating these things? I know you were inspired, but as a teacher, is there a particular age that we should start encouraging them to do this? It is always, you know, we say it is always too late. It should start right from the child when he is born, when he starts giving. तो आपको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है already? You see, I'll just add up to that. Swami ji कहते थे कि you should be a giver, not just taker. We are just taking from society. We should give back. Then only society becomes a healthy society. ऐसा है कि जैसे स्वामी जी ने अपने एक पत्र में लिखा था राजा ऑफ मैसूर को कि वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बाकी तो सारे मृत प्राय हैं. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. So this giving, not just taking, is what keeps you also healthy, society, family, everyone becomes healthy when we start giving. Don't be just takers, be givers. What kind of encouragement do your parents give you on this? Or should the parents be involved? How do you bring the parents into your ambit of influence to influence them? Are in bringing them into our... Do you work together with parents? Sometimes, yes. Sometimes. I mean, they're always there as a support. And without their support, they wouldn't be able to do this. All right? I mean, it is only with, you know, we can't, the school can only give them the opportunity. Achha. But it is the parents who give their consent. And, you know, to their daughters and their sons to do this kind of work. And without the encouragement from home, nothing can happen. I mean, it has to be both the school and the home. That's why I said parents are also teachers. All right, it begins there, and then we take it up. When you get involved in this kind of, what do you know, it's, you know, one has these almost mythological talks about what one feels, but genuinely, आप जब कर रहे हैं, there must be various feelings going through your head. What? When I go to teach, it's not just I'm sharing my knowledge with them that I have, but I also do learn a lot of things from them. It's like when I see them, they're satisfied and content with what they have. Like we're always cribbing about something or the other. Like we want something, okay, we want it, but they can't get everything. So they're kind of satisfied with what they have. And then the other feeling is like when I teach them something and when I ask them a question about it, when they reply, it gives me a sense of satisfaction that I have been able to deliver my responsibility. And okay, I'm giving them a bright future and they'll be able to do something with what they're learning. So it's not just the circuitous return that is happening, It's kind of instant gratification also, which is extremely rewarding. Yes. Anybody else? Look, my life for all these years has been like a one-way journey because I've been getting from all directions. But a couple of days ago, I started with this. I chose to do this. So it gave me a kind of joy like never before. So I took my first step. And I want to go on with this walk and fill it with as many steps as possible. I think that deserves a great thing. A first step is always the hardest. और आपने ये first step ले लिया, and I'm sure many. Would you agree with me, sir? Yes. Yes. You were saying. We've had the pleasure to receive so many things in our life, and we haven't really earned it. Our parents have earned it and given it to us because they are parents. You don't have a sense of entitlement. Absolutely. It's my parents and they have given it to us because they are our parents. When we give back to society, when we are giving them something, we are earning what we have. When we give them clothes, we earn our clothes. When we give them education, we earn our education. So in a way, we are earning what we have by giving what we have. Okay. This similar way our parents have. So kind of we're making our parents proud as well as ourselves, as well as our society. I have to tell you, in the 13 or 14 episodes of this program, the way you guys have moved me is, and I'm a hardcore cynic, let me tell you. But I've got a little lump over here which I'm feeling I need to control for
few seconds. Sanji. I will add to what our bright friends have been telling here. और दो तीन बातें. Swamiji used to say that you should always take the place of a giver, not the taker. उसका और एक थोड़ा सा आगे आप इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके जाएं तो एक बार एक छोटी सी एक घटना हुई. एक स्टूडेंट जो क्लास 11वीं में पढ़ रहा था, 12वीं में पढ़ा, उसने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले. ही वॉज अ टॉपर इन द स्कूल. तो फिर किसी ने उससे पूछा, बेटा ये तुम इतने सक्सेसफुल हुए हो, इसका तुम श्रेय किसको दोगे? ऑफ कोर्स ही स्टडीड हार्ड, उसने भाई काफ़ी काम किया था. फिर वो कहने लगा, मैं 3 व्यक्तियों को इसका श्रेय देता हूँ. एक तो मेरे टीचर को, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया. दूसरा मेरी माताजी ने, जो मेरे को उन्होंने खाना खिलाया, मैं सोया हुआ था उठाया, सब तरह की उन्होंने मेरी केयर की. और तीसरा मैं अपने डॉक्टर अंकल से भी बहुत उनको आभारी हूँ. बीच बीच में सर दर्द होता था या कुछ बुखार होता था वो. तो फिर किसी ने पूछा, अच्छा सिर्फ 3? तो सोचने लगा, नहीं 3 नहीं, और भी हैं. और कौन? मैं शायद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी काफ़ी आभारी हूँ. सब समय इलेक्ट्रिसिटी थी. मैं वाटर डिपार्टमेंट का भी आभारी हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गेटिंग वाटर टू टेक बाथ. और हाँ, मैं उन लोगों से भी आभारी हूँ जिन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी. और ऐसा करते करते उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो गई. वो कहने लगा, मैं सारे जितने भी लोग हैं, मैं सभी का बहुत आभारी हूँ अपनी इस सफलता के कारण. देखिए, आशा है आप लोगों ने आज यहाँ कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और जाना, जो आगे चल के आपको बहुत काम आएगा. So I think you should come over and join me, and we'll take an oath today. Be and make. You've heard of Swamiji's slogan, be and make. It's there in big letters over there. So, is that what we're going to do when we all grow up? Or even now, right? We are going to? Be and make. No, that's very boring. We're going to? Be and make. Nah, could be more exciting. Be and make. That's close. One more with full energy. Be and make. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड. आशा करते हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा. तो मिलते हैं अगले हफ्ते. तब तक स्टे इंस्पायर्ड. नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार सुतपा जी, नमस्कार ऑल ऑफ यू, एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू आउट देयर. Swami Atmashraddhananda ji, on our behalf, would you please present this volume of a cultural heritage of India to Sutapa ji for being here with us and helping us through this marvelous program. Please.